I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. So what exactly are we going to learn in today's webinar? We will present to you a unique therapy for curing your musculoskeletal problems that you or someone in your family may be facing but has not yet found any permanent relief despite spending a good amount of money on various kinds of treatments. So Ashtaang Chikitsa can also be used as a preventive method. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारी चीज आप प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता लाइफ में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले, so that you keep your internal organs functioning at the optimum levels. अब आप जानना चाहेंगे इंटरनल ऑर्गन से न्यूरोमस्कुलर हेल्थ का क्या कनेक्शन है. So going forward, Swamiji will explain to you how internal organs are connected with your neuromuscular health. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi and a human exponents expert. So Swami Raj Vibhu has been transforming lives of thousands of people who have not yet found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. आज हम सभी जानते हैं इन डिजीजेस के लिए आज तक एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है, आपको सिर्फ मेंटेन करना है. But believe it or not, Swami Raj Vibhuji has actually found ways of reversing these chronic disorders. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human being. तो हम क्या बोलना चाहते हैं जब हम बोलते हैं structural issues of a human being? It is the musculoskeletal system is one of them. तो हमारा आज शाम का टॉपिक है musculoskeletal system. So how the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? ये हमें समझना बहुत जरूरी है. आखिर ये webinar है किसके लिए? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution to work upon themselves. People who want to take charge of their health, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, in their own hands without any external intervention or popping a pill, to work on themselves to come out of their health problems that they are facing currently. So reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtaang Chikitsa. जैसा कि कई पार्टिसिपेंट्स ने बताया, उन्हें फ्रीडम चाहिए पेन एंड मेडिसिन. सुबह सुबह उठते ही दर्द होता है, दवाइयां खानी पड़ती है. आई एम श्योर नोबडी एंजॉयज दैट. तो अब रास्ता क्या है वो तो हमें जानना है कि किस तरह से हमें फ्रीडम मिल सकती है पेन से और मेडिसिन से. So balancing of the body at 8 levels. ये क्या है जो 8 सॉफ्टवेयर्स हमारे बॉडी में है, उनके बारे में डिटेल में आपको स्वामी राज विभू जी बताएंगे. So what are the 8 levels of body which needs to be balanced? तो डिजीज आपको क्यों होता है? क्योंकि ये 8 लेवल्स में कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस आ गया है. फॉर एग्जाम्पल सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, प्रकृति एंड विकृति शरीर. तो अब जो ये लास्ट 2 शरीर के बारे में हमने आपको जस्ट बताया, तो जब हम न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल के बारे में बात करते हैं,
So the Prakriti, as the name suggests, natural. That is the regeneration of cells. Vikriti is the degeneration of cells. ये तो हम सबको ही मालूम है. एजिंग प्रोसेस में डीजेनरेशन तो होना ही है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते. जो हम कर सकते हैं वो है रीजेनरेशन फैक्टर को बढ़ाएं. That is the Prakriti Shari. So then what happens? The degeneration और regeneration जब बैलेंस होता है, तभी आप एक सिचुएशन से या पेन से बाहर निकल सकते हैं. So Ashtaang Chikitsa can heal a lot of disease. Of course, it was difficult for us to list each and every disease on earth which we can heal through Ashtaang Chikitsa. ब्रॉड लेवल में जो पाया गया है, जो मोस्ट प्रॉब्लम्स आज के यूथ या आज के यंगस्टर्स या बड़े बुजुर्ग को हो रहा है, वो हमने लिस्ट आउट करने की कोशिश की है. अगेन एज आई से, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. नी पेन अगेन जो 60s के बाद पाया जाता था, टुडे वी सी इट इवन अमंग द 30s and the 40s people. Lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issue, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatic arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, nerve issue. तो जब हम अष्टांग चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, हम ना कि सिर्फ मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में, इवन वी वर्क ऑन द रीजेनरेशन ऑफ द नर्व सेल्स. सो लेट्स हियर फ्रॉम स्वामी राज विभू जी, हम क्या कर सकते हैं अष्टांग चिकित्सा में जिससे आप अपने करंट सिचुएशन से उभर सकते हैं, राइट? So thank you for listening to me patiently. I'll just tell you how we are going to proceed in the webinar. इसके बाद आप सुनेंगे the recorded video of Swami Raj Vibhu ji, जिसमें वो बताते हैं कि क्यों आज के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह आप चीजों से बाहर निकल सकते हैं without taking any kind of external help, just working on your human system and strengthening the internal organs and how it is related to your neuro musculoskeletal system. Mind you, जो आप देखते हैं सामने, be it information, be it pain, उसका reason redirect कहीं और भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नी में इन्फ्लेमेशन है या पेन है, तो जरूरी नहीं है कि वो नी से ही ताल्लुक रखता है. That could be redirected to the liver malfunction or the intestine malfunction or any other organ. तो हम लोग अष्टांग चिकित्सा में क्या करते हैं? We try to find out the root cause कि आपका नी पेन या बैक पेन या फ्रोजन शोल्डर है, तो उसका एक्चुअल कारण क्या है. So once we derive the root cause, which is of course done by Swami Vibhuji, then we give you a customized module which you need to follow and come out of your problem. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आप सुनेंगे स्वामी राज विभू जी से कैसे आप अष्टांग चिकित्सा से बेनिफिट कर सकते हैं. Then we will be inviting somebody live who is a current participant कि कैसे वो अपने जर्नी ऑफ अष्टांग चिकित्सा में बेनिफिट किए. Then, of course, we will share the program details with you. And last but not the least, Swami Raj Vibhu ji himself will be coming live to answer all your questions. तो सब लोग आराम से बैठ जाएं to listen to Swami ji, and don't forget to write your name and number and of course your problems, which I will be taking up after the program details are shared with Swami Raj Vibhu ji when he will be entering live.
Namaste and thank you for listening to me patiently. Over to Anilji to share the screen. So let's start. Neuro Musculoskeletal problem. We are talking about Neuro Musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज्ड देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा. उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. And he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहाँ पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle,
By calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय problem हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, strong करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start. Ashtaang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और Ayurveda kalachar, in yoga kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक example दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I am saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body.
आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. सो व्हेन देयर इज अ पोल्यूटेड एरिया, यू एंटर अ पोल्यूटेड एरिया, एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. इफ यू वॉच योर ब्रेथ, अगर आप अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, व्हाट हैपेंस मोर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन? जरा सोचिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू यू डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, all the 5 senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti.
देखिए आप डिजेनरेशन स्टॉप नहीं कर सकते. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ. यू विल एज, बट यू मस्ट एज ग्रेसफुली. ठीक है, तो हाउ टू बैलेंस विकृति? देयर इज अ मेथड टू बैलेंस विकृति. अष्टांग चिकित्सा विल गिव यू दैट मेथड टू एनहांस प्रकृति एंड बैलेंस द विकृति. सो देन नेक्स्ट थिंग, व्हेन देयर इज अ रीजनरेशन, कोई नई चीज पैदा हो रही है, सो इट विल एक्सपैंड, इजंट इट? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. देयर इज अ लिटिल इन्फेंट which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya, or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. सपोज योर वन हैंड बिकम्स लॉन्ग, द अदर हैंड रिमेन्स शॉर्ट. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. विल यू गेट जॉइंट प्रॉब्लम इन वन ऑफ द शोल्डर्स? आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना. सो इफ यू हैव वन लेग अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर लेग, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal Problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है. मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है, that part is called as kaudi. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है, that is called as nale in the local terminology. नाभि, kaudi, nale. Now if your navi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? सांस रोकी आपने? इवन इफ यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ, व्हाट इज द बेसिक की? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? इट इज कुंभक, इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body.
That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. There is no medicine. There cannot be a medicine. दवाई हो ही नहीं सकती है. So you will have to work internally. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. You can do exercise, you can do weight training, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. Exercise cannot rejuvenate your organ. Exercise से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. So how will it happen? ये होगा कैसे? Should we do a little experiment? एक एक्सपेरिमेंट करें. Now keep your left palm like this. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए. जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath.
सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं, एफर्ट बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and you when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is what how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर. कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर लिवर, टुवर्ड्स योर किडनी, टुवर्ड्स योर थायराइड, टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर. एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर, इजंट इट? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. एंड हाउ डिड यू वर्क? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन. दैट हैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग. सो इफ यू डू ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन इनसाइड, दैट ऑर्गन विल बिकम स्ट्रॉन्ग. दिस इज द ओनली वे. देयर इज नो अदर वे. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the pramana sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए, and there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्मा. इफ दिस जंक्शन पॉइंट इज ओके, लुब्रिकेटेड एंड फ्लेक्सिबल, यू कैन परफॉर्म बेटर. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. योर ऑर्गन फंक्शन विल हैपन प्रॉपर्ली. सो दीज आर कॉल्ड मर्मर्स. सो मर्मर नीड्स अ कांस्टेंट रिजुवेनेशन. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your murmurs are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it, there are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं.
the waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है. लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, न्यू सेलुलर फॉर्म, बेटर सेलुलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेलुलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in Ashtaang Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtaang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो फंक्शन, देयर आर थ्री थिंग्स विच आर अटैच्ड टू फंक्शन. तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी: मटेरियल, एनर्जी एंड मूवमेंट. फंक्शन मींस थ्री थिंग्स: मटेरियल, एनर्जी एंड डायनामिज्म. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. सो व्हाट इज योर जॉइंट प्रॉब्लम? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वात दोष. राइट? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट. तो वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata, Pitta, Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be
cure, rejuvenation. If you do Kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So, neuro problem, usually, कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about, so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now, something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 64-year-old, 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed.
Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप मूव करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose.
in Prana Shakti diagnosis. Yahi Prana Shakti diagnosis hai. We find out the force which has become weak in you, and because of that, you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत magical है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. So he's talked about how to work on your beautiful system. So now I would like to invite Raviji, who would talk about how he has worked on its system and benefited from it. Raviji, can you hear me? Ravi Pesarati, sir. Yes, madam. Namaskar. Namaskar. Thank you for joining us in the webinar today. Thank you very much, ma'am. Over to you. I'll Namaskar. just put you on spotlight so that everybody can see you. He's already on spot. Okay. Namaskar, Swamiji. Good evening to each one of you. Hope I am visible and audible to each one of you. My profound sense of gratitude to the Avisa Healing and Fitness, particularly Swami Raj Vibhuji and the entire team of mentors. My thanks to Pooja Chopra ji, Madam Rachna Botra, Mr. Sukesh, Ms. Ranjana Swain, Ms. Neha Upadhyay, Dr. Shalini,
for this great opportunity and honor to share my experience, in fact. Before I share my experience, a brief background about me. By name, I am Ravi Kumar Pesapati. By location, hailing from Hyderabad, Telangana state. By education, I'm an accomplished postgraduate in business administration and public administration and an undergraduate in law. Currently, at the age of 51 years, I enrolled for PhD in management. Currently, I'm 52 years old, 52 years young. About my issue, in April 2022, I have been diagnosed with the degenerative osteoarthritis grade 2 based on the MRI film and report. Prior to joining in the May 2022, I joined in the Ashtaang Chikitsa course. Before joining into this course, my condition was I have undergone completely 10 days bed rest with a 0 walk, acute pain in right knee, and based on ortho doctors, surgeons' advice, I have taken a complete bed rest. After an improvement of about 20% walk, I found this amazing course through social media. Then, without any chit in mind, back talk in mind, with an open thought, in fact, I enrolled, and it was a great blessing actually. If you look at my current condition, I feel a great light and ease in movement management. I'm able to sit on the ground, stand up and walk without any support, for which I was very, very apprehensive. While so, my pain almost disappeared and not using any kind of a medicine as of now. This result majorly occurred only because of my joining in Ashtaang Chikitsa course. Of course, a regular practice of kriyas prescribed for Vata, Pitta, and Kapha, as Swamiji addressed in his addressing, that is material, energy, and dynamism. And the most important aspect and very significant aspect is the mentor support and the ecosystem what it was created by Swamiji to all of us to pursue this particular course. In my opinion, actually, this Ashtanga Chikitsa is an excellent gift given by Swamiji to the universe and mankind. I wish and recommend everyone to utilize this opportunity without any minute second thought for their health and well-being. Of course, what I can conclude my experience is that, success never ever lies in result, but it lies only in effort and action. My efforts of enrolling into course and my action of regular practice of the kriyas prescribed by the Swamiji and mentors for their support system to balance, that Nabhi, Kaudi, and Nale. I think everyone, they can make use of this, one of the greatest opportunity. There is no exaggeration, but out of inspiration, what I can say is that one should undergo experience, and I think then they'll feel the kind of joy out of undergoing this particular course. I was having so many doubts, in fact, whether after even enrolling also, whether really with the kind of pain what I have undergone, whether really am I able to do the kriyas or not, or whether I am able to sit on ground and stand up again or not. But now, honestly to speak, I'm very comfortable, and
In my self-driven TUV 300, I'm coming to office and functioning, and it is very good. My physical movement has been improved. 40 plus 50, total about 70% it has been improved. Of course, another 30% is yet to improve. I'm 100% confident that probably the remaining 30% also I'll get the improvement in the due course of time. I've been consistently practicing all the kriyas, what it is in prescribed related to Kumbhak, Karanyasa, Manganyasa, and even Marma Vinyasa connected to Vata, Pitta, and Kapha. And it is an amazing course, really. I think if I tell anything, it is less only. I personally feel that the kind of blessings what we all have received from the Swamiji also should be received by all the listeners and those who are, undergoing this particular webinar of today. Thank you one and all. May God bless Avisa Healing and the entire team. My special thanks to Swamiji and Madam Swami, Pooja Chopra. Thank you one and all. May God bless each one of you, including me. Thank you so much, Ravi sir, for sharing your experience and joining us in the webinar. Now I would like to invite Subhadra ma'am to share her experience. Subhadra ma'am, am I audible? Subhadra Nandi ma'am. Subhadra ma'am, can you hear me? I think Neha, probably she is not able to hear me, so we can continue, I think, for right now. So once she... Sorry, I have come now. Okay, thank you so much, ma'am. Actually, I could not place you, so that's the reason I thought you've not joined in or something. Okay, so ma'am, you can share your experience and then we can take it forward. Okay. I am 67 years old and I am staying in Vadodara, Gujarat with my son, and I have lost my husband 3 years back, and after that actually I have getting some panic attacks and some depression. I am experiencing some depression. And also physically, I have a knee pain and lumbar stenosis, means I have pain in my back area. So actually, I joined the course to spend my times, but I got interested and I am. Actually, I am benefited by the kriyas, and it is very good and motivating. And above all, I got my lifestyle changed. Actually, I have no such walks, to regular work. So I used to sleep in late and wake up late in the morning. But now I have regularized my activities and I have become disciplined more to do all my kriyas prescribed by you. So so it is so my life has become better now, and I am completely out of depression. Thank you so much, Subhadra ma'am, for joining us. Over to Anilji for the much awaited program details. Yeah. Okay, just give me a few seconds. Namaskar, everyone. Let's get to the details of the program, as many of you are waiting for it anxiously. Let me share my screen. Just give me 2 more seconds.
Rachna ji, are you able to see my screen? Yes. Okay. Okay. So let's get to know about the program details. काफी लोग इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, काफी पूछ रहे हैं इसकी कॉस्ट क्या है. So we'll get to it very fast. This is a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. These mentors are trained by Swamiji, so they'll be conducting all these online classes. So that's one thing. ये guided program है जिसमें एक online में जो mentors हैं, स्वामी जी द्वारा trained mentors हैं, वो classes conduct करते हैं. जैसा कि आप पहले ही जान चुके होंगे, इस प्रोग्राम में 3 मॉड्यूल्स हैं. There are 3 modules in the program. Module 1, Module 2, and Module 3. Module 1 is for Vata, Module 2 for Pitta, and Module 3 for Kapha. And each module is of 21 days. हर एक मॉड्यूल 21 दिन का है, तो टोटल हो जाता है 63 days. Total duration is 63 days or 9 weeks. Program overview 9+1. I told 9 weeks, but I've added another one. We'll get to know why. 10 हफ्ते का ये total engagement है. There'll be 2 live classes per week, out of which one will be the learning class or the main class, and one would be the mentoring class or the practice class. All these classes are recorded, so you'll get access to all the videos and written instructions. ये सभी classes record की जाती हैं और आपको available कराई जाती हैं एक login ID और password के थ्रू. What are the next steps? अगले हमारे क्या steps लेने हैं? आप प्रोग्राम फी पे करते हैं और एक स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग है जो आपको लास्ट में अनाउंस करेंगे फॉर पीपल हु स्टे बैक. उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म फिलअप करते हैं ताकि हम आपके लिए लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकें, और उसके बाद आप क्लासेस अटेंड करते हैं स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 1. मॉड्यूल 1 के साथ आप स्टार्ट करेंगे. टोटल क्लासेस 6 classes for module 1, out of which 3 are learning and 3 mentoring classes. Same is true for module 2 and module 3. So total 18 classes plus 1 customization class. Total 18 class होंगी और एक customization class. What is customization? We'll get to it in a short while. Customization क्या है थोड़ी देर में हम समझेंगे. तो total engagement जो होता है 10 हफ्ते का होता है. Total engagement is of 10 weeks. Class start date for 89th batch. ये हम 89th बैच स्टार्ट कर रहे हैं. विल बी स्टार्टिंग द 89th बैच ऑन 18th जुलाई. 18 जुलाई को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे 6 बजे शाम को. और मॉड्यूल 2 जैसे ही मॉड्यूल 1 खत्म होगा, मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा 9 अगस्त को. 9th August will be the starting date for module 2. Module 3 will start on 31st August. But you have to start with module 1. Module 1 के साथ स्टार्ट होगा और उसके बाद module 2, module 3. Ultimately आपने सभी मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है एज अ पार्ट ऑफ द होल प्रोग्राम. मेंटर क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस. मॉड्यूल 1 के लिए मेंटर क्लासेस रहेंगी थर्सडेज को, मॉड्यूल 2 के लिए फ्राइडेज को. एंड डोंट वरी, विल बी शेयरिंग ऑल दीज डिटेल्स इन व्हाट्सएप and as well as in the chat, in the Zoom chat. So you don't need to remember. What is the class experience like? Class का experience कैसा होता है? Live sessions होते हैं. ये mentors आपको observe करते हैं कि आप correctly क्रियास कर रहे हैं या नहीं. Mentors observe you to see if you're doing the kriyas correctly or not. We understand this is a online program and a lot of people have some doubts about the online program. क्योंकि हमें आदत होती है फेस टू फेस इंटरेक्शन की. वी हैव अ we in the past we've had face to face interaction. So when we talk about the online session, there's some doubts in people's mind, there are some apprehensions. लोग एक डाउट होता है कि ऑनलाइन के थ्रू कैसे थेरेपी कंडक्ट किया जाएगा. So don't have to worry about it. We are experts at conducting these classes and this is the 89th batch. We have more than 1,400 previous participants and everything was done online only. So just be assured of this. Then apart from the mentors who watch you in the classes, you get written instructions English and Hindi as well. Now आपको instructions हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती हैं. जो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको एक PDF फाइल मिलेगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं. There will be a PDF file which you can download in which written instructions are there. Then session recordings are there.
ऑल द क्लासेस आर रिकॉर्डेड, सभी क्लासेस रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको अवेलेबल की जाती है थ्रू लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको मिलती हैं। सो अगर कोई क्लास मिस भी होती है आपकी तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, कवर अप कर सकते हैं। There'll be a lot of extra things that will be shared with you, like mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. This is a diet perspective in which you'll get a video from Swami ji. And basically that's about using food to support the body instead of harming the body. खाने को ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि बॉडी को सपोर्ट करे, वो इस डाइट पर्सपेक्टिव जो वीडियो मिलेगा आपको उसके अंदर बताया गया है। Then you'll get simple detox processes मिलेंगे आपको, काफी और इसके अलावा भी नॉलेज शेयर की जाती है आपके साथ। Yearly expenses, let's look at how much you may be spending to just manage your disease. Before I come to the actual pricing or the fee of this program, let me just share with you how much of money we could already be spending in the disease, on the disease that you already have. क्यों जरूरी है थोड़ी देर में हम समझ जाए। Why this is important? Because we need to know if you're getting a return on your investment at price or the fee that you pay, what you get in return. So अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, you may be paying 6,000 to 12,000 rupees in just the doctor's fees yearly. मैं साल की बात कर रहा हूँ कि 6,000 से 12,000 के बीच में आप शायद एक साथ डॉक्टर फीस पे कर रहे होंगे। फिजियोथेरेपी अगर आप कराते हैं, if you're into physiotherapy, another 12,000 to 30,000, and medicine may be costing 15,000 to 30,000. If you total all of these, 33,000 to 72,000 you could be spending on the disease, just to manage that disease, not solution, just the management. And we all know about the side effects of allopathy medicine, so we don't want to go into detail. Before I share, another thing that I'd like to point out is that it's important to know why this is, who this program is not for, so that it becomes crystal clear who this program is for. ये हम जानेंगे कि इन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि किन लोगों के लिए है। This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. Although for some people this therapy works like magic. I mean, some people get the results tomorrow only, but that's very rare. Why we are talking about this, that we have used to taking medicines, and most of the time it's allopathic medicines, कि हमने एक गोली खाई और हमें आराम आ जाता है, और शॉर्ट टर्म होता है, टेम्पररी होता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट उसकी हमें आदत हो चुकी होती है। इसलिए जब भी कोई हम चीज ट्राई करते हैं तो हमें लगता है कि एकदम से रिजल्ट क्यों नहीं आया। सो ये उस तरीके का प्रोग्राम नहीं है। देयर विल बी रिजल्ट्स बट दैट मे टेक टाइम। सो इसलिए दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ मैजिक पिल। देयर कांट बी अ मैजिक पिल, एज स्वामी जी इज राइटली सेड, and this is not for those who are not ready to work on their body. See, you got into a problem because something has gone weak in the body. कोई चीज ऐसी कमजोर हो गई है शरीर के अंदर जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आए। तो अगर आप शरीर को जो चीज, जो आपके ऑर्गन या फंक्शनिंग वीक हुई है, अगर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप तैयार नहीं है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, राइट? And this is not for those who cannot invest 60 to 70 minutes every day on themselves. ये उन लोगों के लिए नहीं है जो 60 से 70 मिनट अपने ऊपर ना लगा पाए डेली बेसिस पर। मुझे काफी लोगों से मेरी बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सो ये उन लोगों के लिए नहीं है। If you are serious and if your health, your body is the topmost priority, क्योंकि सारा काम इसी शरीर ने करना है जब तक हम जिंदा हैं, तो अगर आप इतना टाइम नहीं दे पाएंगे तो इस प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट। कई बार क्योंकि बीमारी होती है, हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं। हमें जल्दी है इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को जल्दी है। शरीर अपने हिसाब से हील होगा, शरीर अपने हिसाब से काम करेगा, हमारे चाहने से नहीं करेगा। लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सो अगर इम्पेशेंट आप हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रीटमेंट और जस्ट सम टिप्स। 80% के आसपास लोग जो वेबिनार्स में आते हैं, they are looking for some tips, or maybe that they come with a hope that they'll receive something and then they'll apply it.
then they'll watch another webinar from another expert, from another therapy. They'll pick some tips, but this is the most dangerous way of treating your body. Why? Because one expert will treat you, will say something, the other may say the opposite. एक एक्सपर्ट कुछ एक बोल सकते हैं, दूसरे एक्सपर्ट दूसरी चीज बोल सकते हैं. और हीलिंग जो होती है, इंटरनल हीलिंग जो होती है, इट डज नॉट वर्क ऑन टिप्स. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट दिस इज नॉट अ फ्री ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें आपको हैंड होल्डिंग होती है. आवर मेंटर्स टेक केयर ऑफ एवरीवन, सो द टाइम रिसोर्स इज रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. काफी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें फ्री करना चाहिए सोसाइटी की भलाई के लिए, बट जो हमें हमारा स्टाफ है, वी हैव टू सपोर्ट दोस, सो वी हैव टू चार्ज फॉर दिस. सो अगर आपको फ्री ट्रीटमेंट है तो दिस इज नॉट फॉर दोस पीपल. देयर सम, देयर मे बी अदर दिस थिंग. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर. Now let's get to understand what you get. This will blow your mind. Prana Shakti diagnosis for root cause determination. This alone in itself could be worth the whole cost or the whole fees of the program. Why? Because there are very few treatments or therapies who try to find out or who can find out the root cause of the problem. In this, the root cause of the problem is determined, and after that, a solution, we go to a solution. Because जब तक हमें जड़ का पता नहीं लगेगा तो हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होंगे. So this is very important. The key to this therapy is Prana Shakti diagnosis. There will be one weekly main class of 60 to 90 minutes. 60 से 90 मिनट की मेन क्लास होगी वीकली एक प्रैक्टिस क्लास होगी 60 से 90 मिनट की. देयर विल बी अ वीकली प्रैक्टिस क्लास ऑफ 60 to 90 minutes. ऑनलाइन कोर्स एक्सेस फॉर 6 months. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि मैंने बताया, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑल द क्लासेस आर रिकॉर्डेड. सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं. उसका एक्सेस आपके पास, जैसे आपको थेरेपी 10 हफ्ते का होता है, उसके बाद खत्म होता है, उसके बाद 6 महीने तक आपके पास ये रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस होता है. एंड दैट इज इनफ टाइम टू लर्न ऑल द क्रियाज बाय हार्ट. इसके अलावा जैसे मैं बता चुका हूं कि आपके पास रिटन इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं. सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. Videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? Class recording are of the whole class, whatever duration is 60 to 90 minutes. But these kriyas are, these videos are of each kriya separately. Some kriya may take 2 minutes, some 5 minutes, 10 minutes. You don't have to watch the whole recording of the class to just to watch that kriya. So these are separate videos of separate kriyas. Then written instructions are already told you. Some people like to learn from written instructions. Other people like to learn from videos. Whichever is your style of learning, they both are available to you. दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं, चाहे आप written instruction से सीखें या videos से. Private WhatsApp group to ask doubts, questions 6 days a week. Sundays हमारे mentors weekly off होते हैं, so उस दिन आप question पूछ सकते हैं, but reply Monday को आपको आएगा. And this is the place where the action will happen. This will be your home for the next 10 weeks. ये आपके लिए जो WhatsApp ग्रुप है, जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा. कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे related to the kriyas and your program, all will be answered here. So don't have to worry about कि किससे पूछे, क्या करें. We've got a proper team of people who take care of this. Mentors हैं, वो जवाब आपको देंगे. Individual participant progress tracking. हर एक इंडिविजुअल्स को, हर एक पार्टिसिपेंट के लिए एक फॉर्म का हम डेली फिलअप कराते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसा है उस दिन, क्या चीज ठीक से हुई, क्या ठीक से नहीं हुई. सो वी गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रोग्रेस ऑन अ डेली बेसिस. थेरेपी कस्टमाइजेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th वीक. अभी आप, अगर कुछ लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि अगर सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, क्योंकि न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मे बी मोर देन 30 प्रॉब्लम्स आर देयर, ऑल आर एड्रेस थ्रू दिस प्रोग्राम. तो 9 हफ्ते तक सेम अगर वो प्रोग्राम करते हैं तो उस सभी के लिए कैसे लागू होता है? हाउ इज इट पॉसिबल टू ट्रीट ऑल दिस प्रॉब्लम? लेट अस टॉक अबाउट इट अ बिट इन डिटेल. इन 9 हफ्तों में कई बहुत इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं. लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपन इन दिस 9 weeks. और जो 10th वीक है उसमें कस्टमाइजेशन है. लेट यू नो व्हाट कस्टमाइजेशन इज. द फर्स्ट थिंग दैट इज डन इन these 9 weeks is the balancing of the Vata, Pitta and Kapha in the body.
एक वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा तो एक अलाइनमेंट होता है, स्वामी जी ने जो वीडियो में भी बताया हमें थोड़ी देर पहले, कि आपका 3 बेसिक अलाइनमेंट्स है बॉडी का, थाइस, नेवल एंड द कॉर्डिंग और द चेस्ट फैक्टर, इनका अलाइनमेंट होता है। तीसरा जो मेन काम होता है, दैट इज यू आर टॉट टू एक्सेल इन अ कंट्रोल्ड मैनर। आपको एक्सेलेशन पर कंट्रोल सिखाया जाता है इन 9 हफ्ते के थ्रू। और फिर जब प्राण शक्ति, आप इफ यू रिमेंबर, मैंने फर्स्ट पॉइंट जो आपको बताया था वो था प्राण शक्ति डायग्नोसिस, द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। सो बेस्ड ऑन दैट रूट कॉज द थेरेपी विल बी कस्टमाइज्ड फॉर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए आपके डायग्नोसिस के हिसाब से थेरेपी को फाइन ट्यून किया जाएगा, कस्टमाइज किया जाएगा 10वें हफ्ते में। इन द 10th वीक द थेरेपी विल बी कस्टमाइज्ड फॉर ईच एंड एवरीवन, एंड these 9 weeks are required to prepare the body to receive this customization. कस्टमाइजेशन को रिसीव करने के लिए आपकी बॉडी को तैयार किया जाता है 9 हफ्ते में, जैसा कि मैंने मेन 2-3 चीजें बताई आपको, राइट। आगे देखते हैं। एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर 30 days आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर। दिस इज अ यूनिक प्रोग्राम, वी जस्ट डोंट लीव यू आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर आफ्टर 10 weeks. There's a 30 days support that we offer to all the participants, and you'll appreciate this because not many people do this, not many therapy or treatments do this, especially online, because we understand this is an online program and there are challenges in an online program compared to a face-to-face. Although there are more advantages of an online program compared to a physical locations program, but still we'll offer 30 days of extra support. There's no charge for that. That is a part of the fee only. All these points I've already talked about. Now, जिसके लिए ज्यादातर लोग इंतजार कर रहे होंगे, the program fee for Ashtaang Chikitsa 9,500. But like I promised, there's a special webinar pricing for people who stayed back. Let's get to see what that pricing is. Just 5,500 for the complete program, which include the Pran Shakti diagnosis, 18 classes for during these 9 weeks, plus 1 class for the customization. So total 19 classes. And if you divide 5,500 by 19, it just comes to rupees 290 per class, plus all the other 10 benefits. Why this is important to know? Because what you're getting and what you are paying for something, we need to understand and this is beyond 5,500. This is much more beyond 5,500. When you look at the benefit, there's nothing that is put from outside. आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ में क्रिएटिंग एबिलिटी को यूज करके एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, and that too at such a economical and affordable pricing. So nobody will have any, at least financial issues by paying for this. That's the promise that we make. And how to enroll? You pay the program fee, post the payment receipt in the WhatsApp group, then you fill the participant onboarding form, join the first module and start attending classes. Very simple. The payment method we'll share in the chat as well as on WhatsApp. Now, I'll just like to stop here and talk about the super team we have. Why this is a super team? People who are already enrolled, they know that this is a super team because these are mentors, these are team members who support each and every participant. They're very patient because we understand that people who join these courses, most of the people are in pain. So sometimes there can be some, you tend to become a bit impatient when you're in pain and a disease. But mentors, they're very patient. They listen and answer each and every question. Hand holding is done step by step. So we've got Rasna Shrivan Bothra, she's the program director and the host of this program also. Then we have Shalini Bhagwat, she's in charge of all the classes, the timings and everything. Pooja Chopra, she's a senior mentor. Ranjana Swain, another mentor we have. Sukesh Raj, another mentor. R.D. Gupta ji, another mentor we have. Neha Upadhyay, she's in charge of all the enrollments. So she'll be the person you'll be talking to the most before you enroll, before the classes start. Anil Chauhan, that's me. I'll be answering all your questions in the WhatsApp group because we may not be able to take all the questions with Swamiji due to shortage of time. But if your question is not answered, you can write in WhatsApp group and I'll be answering all the questions.
Then we have Himanshu Reddy. He's the technical person who takes care of all the login IDs, password, the video, the downloadable files and everything. If your video is not playing, he's the person that will be helping you out. So what I want to emphasize upon is that we have a proper team. So you don't need to be worried about that it's an online program, who will talk to, who will help us. We have a proper team in place. And this is the 89th batch that will be starting. We've already passed out 1,400 participants. So need not worry whether this will work online or not. We are experts at that, and that's our responsibility. And with this, I come to the end of my part. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now, the much awaited Swami Rajvibhuji has joined in to answer all our questions. Good evening, Swamiji. Thank you for joining us. We'll be taking up the questions one by one from the chat box. And once I complete the questions in the chat box, I will be taking up the questions whoever raises their hands. Farida ma'am writes, basic therapy क्या knee pain को cure करने के लिए है? नी पेन को क्योर करने के लिए है बेसिक थेरेपी. बेसिक थेरेपी आपकी किसी भी न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए. नी पेन उसमें से एक है. ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी हमारी समझ जो है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ है. तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपका हार्ट ठीक नहीं है या लिवर ठीक नहीं है तो क्या आपको नी पेन हो सकता है? हो सकता है. नी पेन का मतलब ये नहीं है कि आपकी नी में प्रॉब्लम को आप केवल एड्रेस करें. आप केवल नी की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी क्या? आखिर में आपके डॉक्टर बोलेंगे जी घुटने बदलवा लीजिए, तो वो तो ठीक कर नहीं रहे है ना, वो तो ठीक कर ही नहीं रहे. अच्छा, नी प्रॉब्लम किस किस वजह से होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ. ऐसा है ना कि आपको थोड़ा समझना जरूरी है. आप कुछ भी करें उससे पहले थोड़ा समझें. और प्रॉब्लम यह है कि आप अपने डॉक्टर के साथ में क्वेश्चन भी नहीं पूछते. तो नी पेन happens because of, it can happen because of many reasons. One of the reason is if your liver is not functioning properly and you are a person whose lower part of the body, or you are a vata paksha person जिसके अंदर वात दोष जल्दी हो सकता है, ऐसा अगर आप हैं, then the liver problem will create inflammation in the body, but mostly in the lower part of your body. And then you can get into knee pain, hip area, lower back pain. Also, when your liver is not functioning properly, you'll get into metabolic disorder. आपके शरीर में metabolism ठीक नहीं. So there is always a regeneration aspect. That is what we talked about in Ashtaang Chikitsa. Prakriti means regeneration factor of the body. वो regenerate नहीं कर पाएगा चीजों को, तो degeneration बढ़ गया. That is why something will wear off fast. उस वहां पे degeneration ज्यादा होगा. So liver can cause this. The second factor, there is something called as a unidirectional movement in your body. Your blood flows in one direction, your food goes in one direction. भोजन एक ही दिशा में जाता है, हवा भी एक ही दिशा में जाती है, खून भी एक ही दिशा में जाता है, हार्मोन भी एक ही दिशा में जाता है. यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इसको हम कहते हैं कि ये फ्लो नाग वायु की वजह से होता है. So if the Nagavayu factor is less or has got weak in you, अगर Nagavayu factor weak, then any kind of unidirectional movement will get hampered. कोई भी एक दिशा में जो क्रियाशीलता है आपके शरीर की वो खराब हो जाए. तो your limbs are made for one directional movement. आपके लिम्ब जो है ना, खास करके घुटने, टखने, कमर, वो एक डायरेक्शन के मूवमेंट के लिए बनी हुई है. तो वहां पे कमजोरी आ जाती है. तो दो चीज बताया,
इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, लिवर की वजह से हो सकता है, नागवायु दोष हो सकता है, और भी बता सकता हूं मैं, मगर इतना ज्यादा पढ़ लिख के करेंगे क्या, ये बताइए। यू नीड अ सोल्यूशन एंड दैट इज व्हाट वी आर गिविंग यू इन द प्रोग्राम। अगर मैं आपको 1 महीने पढ़ाऊं तब भी आपके घुटने ठीक नहीं होंगे, लेकिन अष्टांग चिकित्सा प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाए, ठीक है ना। सो वी डायग्नोज यू व्हाट फैक्टर हैज गॉन वीक इन योर बॉडी, आपका इसीलिए प्राण शक्ति डायग्नोसिस कर, और उसके बाद आपका पूरा मॉड्यूल उसी हिसाब से डिजाइन करके आप सीखते हैं, फिर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट Okay, क्वेश्चन। Padmasini ma'am says, can't raise my hands above knees level. No sleep in night due to pain in upper neck and shoulder. देखिए आपका ना वात कफ दोष है और कफ वात दोष, योर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गेटिंग इनटू प्रॉब्लम। ऐसे लोगों को थायराइड की सिचुएशन प्रॉब्लम भी होने के चांस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं। तो अभी क्या करना, अभी क्या करना है। सो आपके शरीर में 6 शक्तियां होती है, देयर आर 6 स्ट्रेंथ्स इन योर बॉडी। देह बल, वी कॉल इट बल, ठीक है ना। देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ये 6 बेसिक शक्तियां हैं शरीर की। अगर ये स्ट्रेंथ आपके शरीर में प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, किस वजह से काम नहीं कर सकते, ईदर दे डोंट हैव स्ट्रेंथ और योर बॉडी डजंट हैव बैलेंस एंड देयर इज फंक्शनल डिस्क्रिपेंसी, रिदम नहीं है शरीर में। हाँ, रिदम नहीं है शरीर में, बैलेंस नहीं है शरीर में, स्ट्रेंथ नहीं है शरीर में। भाव, राग, ताल, भारत, भारत आपके देश के नाम में ही हेल्थ, मगर आप वो काम नहीं कर रहे। द सूत्र इज देयर, द सूत्र इज देयर। If you create the 6 basic strength, the 3 basic balance and the rhythm of your body, you will see you can come out of these disorders. What is thyroid issue? जब कफ वात होता है ना तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो होता ही, प्रोटीन पचाने में डिफिकल्टी, you get into protein allergy, but your dietitian will say प्रोटीन खाओ, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। And you will see people are getting into kidney issues, cancer, प्रोटीन यूरिया। हाँ, शरीर के अंदर इस तरीके की चीज, यूरिक एसिड बढ़ रहा, हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन हो, थायराइड इज अ प्रोटीन एलर्जी, और दूसरी बात हार्मोनल इम्बैलेंस। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अनिल जी बोल रहे थे ना एक डॉक्टर कुछ बताएगा या दूसरा बंदा कुछ बताएगा वेबिनार में एक बताएंगे कि आपको प्रोटीन खाना चाहिए, दूसरे बताएंगे प्रोटीन खराब होता है। यू कैन सी इन द गूगल में जाइए, आपको पता चलेगा। बट अगर आप शरीर का रिदम बना के रखेंगे, देन योर बॉडी कैन फॉर्म इट्स ओन प्रोटीन, क्योंकि शरीर बाहर की प्रोटीन एक्सेप्ट नहीं करता, इट ब्रेक्स इट डाउन इनटू अमीनो एसिड एंड क्रिएट्स इट्स ओन। तो क्रिएटिंग एबिलिटी ही कम हो गया। याद कीजिए अपने दादा दादी नाना नानी, याद कीजिए योर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, physically were they more strong or are you more strong? With all your science, all your medication, are you more strong or were they more strong? उनकी शारीरिक क्षमता आपसे ज्यादा थी या आपकी ज्यादा है? आपकी बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम हो गई। So no medicine will cure. In fact, medicine has created this disease. I have talked about it. यही वेबिनार में बोला. If you haven't been able to join the complete, we will share it in the WhatsApp group you are a part of. पूरा वेबिनार शेयर करेंगे, आप दोबारा से देखिए, क्योंकि ये चीजें आपको 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा। सो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इस कफ पक्ष, हम इसमें करते ही हैं वो काम। वात वाला पार्ट, 3 weeks of vata part, 3 weeks of kapha part, 3 weeks of pitta part. We'll balance those aspects. Then we will also see what is the root problem of your root cause of your problem, and we'll customize it.
सो जिनको ऊपर की तरफ में ज्यादा आ रहा है ना, वो कफ विकार में आता है, तो वो आप उसको अगर बैलेंस करते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। Okay. Nitin sir writes about body aches, neck pain after COVID. Why this has happened? So body ache and neck pain after COVID. COVID impacts the lung, है ना? ये आपने सुना. COVID impacts the lung. So the upper part of your body, it impacts the upper part of your body. It disbalances what you call as kapha. It creates kapha vata dosha. वो kapha vata दोष create करता है. अच्छा, how did you tackle COVID? COVID से बचे कैसे आप? आपने कोई ना कोई दवाई खाई, right? So do you know that your body is intelligent? क्या आपको मालूम है कि आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंट होता है? Do you know these problems of chronic disease is happening in this era only? 100 साल पहले किसको डायबिटीज था बताओ? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज किसको था? थायराइड इश्यूज किसको था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको था? कैंसर किसको था? So our body has the ability to handle any kind of disease. हमारे शरीर की क्षमता है कि वो किसी भी डिजीज से अपने आप को बचा के रखता है. That's why humanity never got into disease for millions of years. लाखों सालों तक मानवता डिजीज में नहीं आई थी. In the last 100 years, you will see it is like becoming epidemic. Every disease is becoming epidemic. तो शरीर जब 5 डिग्री, it raises its temperature by 5 degree, it can kill any kind of virus. अगर इस शरीर का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ जाए तो किसी भी वायरस को ये खत्म कर सकता है. लेकिन जैसे ही शरीर का तापमान बढ़ता है, आप क्या करते हैं? यू पॉप इन अ पिल कॉल्ड पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन, ऐसी चीजें आप खा लेते हैं. तो यानी आपने शरीर को काम ही नहीं करने दिया. देन कोविड, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ कोविड इज देयर इज नो सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल. आपका स्वाद और गंध जो है गया. इसका मतलब क्या? व्हाट द बॉडी इज ट्राइंग टू से, प्लीज डोंट हैव फूड. भोजन ना लें, जूस, पतली चीजें लें. मगर आप मानते ही नहीं, आप शरीर की नहीं सुनते हैं, आप किसी डॉक्टर की या किताब की सुनते हैं. तो उनसे पूछिए कि आपने बचपन से इतनी वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन किया, इतनी दवाइयां खाई, ड्रग एडिक्ट बन गए, फिर भी आप क्यों हेल्दी नहीं है? तो ये शरीर को काम करने दीजिए ना इसका. एंड इट कैन टेक केयर ऑफ एनी डैम डिजीज. किसी को भी ठीक कर देगा. मगर वो दवाइयां खा के और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, एनवायरनमेंट खराब है, ये सब करके हमने शरीर की वो इम्यूनिटी ही कमजोर कर दी. उसको तो बढ़ाना पड़ेगा. तो कोई बाहर की चीज अगर आपको इम्बैलेंस करे तो आप बैलेंस में कैसे आते हैं? किसी को बोलिए कि आपको धक्का दे and try to get into balance. You will hold your breath to get into balance, isn't it? So if your immunity is weak, what is the problem? Your breath hold capacity has gone down drastically. कुंभक आपका कमजोर हो गया साहब. इम्यूनिटी भी आपको किसी और चीज से नहीं बढ़ेगी, कुंभक से ही बढ़ेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि if you have to increase the resilience and the 6 basic strength of the body, you will have to use kumbhak. And then if you want to come out of the impact of medication that you have taken, जो कोरोना में आपने दवाइयां खाई, उसका असर तो होगा आपके शरीर. वैक्सीन लगाया, उसका तो असर होगा ही आपके शरीर. उससे अगर निकलना भी चाहते हैं तो शरीर को थोड़ा सपोर्ट करें, इसको थोड़ा बल दें, तभी आप निकल पाएंगे. किसी दूसरी चीज से नहीं निकल सकते. So if you want to come out of COVID symptoms, please, it should be compulsory for such people to do kumbhak. उनके लिए तो कंपलसरी होना चाहिए. पर फिर भी हम आपको चॉइस देते हैं, प्लीज अपने शरीर की मदद कीजिए. Okay, Rachna ma'am writes about fibromyalgia and back pain due to slip disc. स्लिप डिस्क पहले, देन आई विल टॉक अबाउट फाइब्रोमाइल्जिया. स्लिप डिस्क, आप ऐसे गोल गोल ना रीढ़ की हड्डी की तरह चपटे पत्थर ले लो और बीच में छेद कर दो, 33 स्टोन्स, और उसके बीच में एक रस्सी डाल दो एंड पुल इट टाइट. दिस इज
व्हाट इज कॉल्ड ए स्पाइनल कॉर्ड, और आपका रीढ़ की हड्डी यही है। अब वो स्लिप हो रहे हैं, क्यों? इसका मतलब आपका तनाव जो खींच रखा है आपने, वो ढीला करेंगे तो स्लिप होते हैं ना, फिर वो स्लिप हो जाते हैं, उनका शेप में नहीं रहेगा। सो वो जो तनाव है, द टेंशन इज कॉल्ड एज व्यान। उस तनाव को व्यान कहते हैं, और व्यान आपका कमजोर होगा तो स्लिप डिस्क होगा। फिर अब मुझे बताइए ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल सॉल्यूशन? ध्यान को मजबूत कीजिए, एंड वी आर टीचिंग यू दैट प्रोसेस। वी टीच यू थ्री थिंग्स, तीन चीजें सिखाते हैं, अंग न्यास, हठ विन्यास एंड कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में तीन चीजें सिखाते हैं। द थर्ड पार्ट इज व्यान क्रिया कुंभक, वो हम दे ही रहे हैं। विदाउट करेक्टिंग द व्यान, the skeletal structure will not never get corrected. The second part that Vyana does, दूसरी चीज जो व्यान करता है, is creating the osmotic pressure or the tissue pressure. जब आपके शरीर में ये टिश्यू प्रेशर होता है ना, तभी कोई चीज एक्सचेंज अच्छे से होती है। So I talked about liver discrepancy. जब आप रोज अपने शरीर को केमिकली बॉम्बार्ड करते हो तो लिवर आपका कमजोर है ही, पूरी दुनिया का कमजोर। बचपन से आप बॉम्बार्डिंग कर रहे हो, केमिकल बॉम्बार्डिंग, तो लिवर इज द गेट कीपर, इट गेट्स इंपैक्टेड। बट वो आपके शरीर का गऊ है, 95% जब तक डैमेज नहीं होगा इंडिकेशन नहीं देगा, तो आप टेस्ट भी कराओगे तो नहीं निकलेगा, बट वीक तो है ही। वीक है, मेटाबॉलिकली वीक है, तो देयर आर 7 लेवल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट योर बॉडी नीड्स। आयुर्वेदिक टर्म में ज्यादा समझिए, क्योंकि साइंस में इसका कोई मतलब, मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, साइंस तो इन्होंने टैग लगा लिया अपने ऊपर, बट एलोपैथी में इसको समझते नहीं। सो इट हैपेंस ऑन 7 बेसिक लेवल्स। रस एंड क्रिएट समथिंग, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये चीज बनने के लिए, बेसिक टिश्यूज हैं आपके बॉडी के, बनने के लिए आपको 7 लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म चाहिए। थर्ड पार्ट, रस, रक्त, मांस, यहाँ पे आपके मसल्स बनते हैं। अगर आपका फर्स्ट लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म ही वीक है तो आपके मसल्स नहीं बन पाएंगे, पहली बात, अच्छे से नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा, यानी उनके लिए एक्सचेंज नहीं होगा, तो ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उसी को फाइब्रोमाइल्जिया आप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नामकरण संस्कार ये बहुत अच्छे से करते हैं, आप प्लीज समझिए इसको, ये होता क्या है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक सोल्यूशन नहीं बनता। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ठीक नहीं होगा, है ना, और व्यान पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, तब तक आपका बॉडी में एक्सचेंज, कोई भी चीज बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसका कम। आजकल आप सुनते होंगे लोगों के कि कैल्शियम की कमी, विटामिन बी, ये वो, डी की कमी, सब मिनरल और विटामिन की कमी हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कमी हो रही है, आप बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली ईटिंग मच मोर देन रिक्वायर्ड। आपके पूर्वजों को इतना भोजन नहीं मिलता था जितना आप खा रहे हैं, मगर आपका शरीर इस लायक ही नहीं है कि वो उसको ऑब्जॉर्व कर सके, वो उसको डाइजेस्ट कर सके, वो उसको मेटाबोलाइज कर सके। तो आपको डेफिशिएंसी नहीं, आप बाहर से भी दोगे तो डेफिशिएंसी ठीक नहीं होगी। ऑस्टियोपोरोसिस एक इंसान बता दीजिए जिसका ठीक हो गया है दुनिया में कैल्शियम खाकर, बट ब्रेस्ट कैंसर के चांस 200% बढ़ जाते हैं लॉन्ग टर्म कैल्शियम खाने से। तो एब्जॉर्प्शन तो बढ़ाओ, लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन हैज टू बी देयर फॉर अ सोल्यूशन। तो आप एब्जॉर्प्शन बढ़ाइए, एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे तो आपके शरीर को वो न्यूट्रिएंट मिलेगा, आपके टिश्यूज को मिलेगा, टिश्यू रीजनरेशन होगा, तो फाइब्रोमाइल्जिया से आप निकल जाएंगे। दूसरा एग्जांपल, आपके बॉडी में रफ पैचेस हैं कहीं, सिमिलर कंडीशन ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। आप कुंभक 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते कर लीजिए, वो सॉफ्ट हो जाते। क्या हुआ? जो हार्ड हो गए थे टिश्यूज और मसल्स, वहां पे सॉफ्टनेस आ गई। डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं, सीधा सीधा सॉल्यूशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन।
Rachana ji. Next question is, I have knee problem, Vasudevan sir writes, but can sit in Sukha cannot fold knees for Santulasana and Natrajan. Have also lower back pain, TB of one middle vertebra some 18 years ago. So can this problem be addressed? It can be addressed very, what you say, very easily. So you can't sit in certain pose. For that, you need certain flexibility of your body. Now, flexibility of the body happens because of what? So you see a young person, that young person becomes old. Does that person loses flexibility? So what has happened? Hua kya? If you touch a young person and if you touch an old person, what is the difference? The young person is warm, the body is warm, but the old person's body is cold. So you have lost metabolic heat during the process of aging. So without body movement, can you sweat? Can you increase the heat of your body without moving your body? I'll tell you a method. You hold your breath as per your capacity and keep holding it many times. You'll see your body will become warm. क्या किया आपने? कुंभक करके आपने एक metabolic heat बढ़ा दी अपने शरीर की. But suppose we also diagnose you. Suppose we find that your liver is not functioning properly. Then we'll give you certain methods like 1 unit inhalation, 1 unit hold, 4 unit exhalation, and it will start rejuvenating your liver. If your detox process is not proper, that means kidney is not functioning properly. There are a lot of toxins. Because of that also, there is joint pain. And the flexibility gets lost. So the detox is not happening properly. So what we will do? We will invigorate certain aspect of your body. Spleen को हम invigorate कर देंगे. And kidney को करें. So 4 unit inhalation, 2 unit hold, 1 unit exhalation, your kidney will start rejuvenating. तो क्या इसको हम handle कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं. But you have lost certain factors, strength of your body. If you increase those things, your body can create any kind of solution. Okay, Vasudevan sir writes about any solution for urinary problems. Urinary problem may happen because of few things. 2-3 चीजों के बारे में मैं बता देता हूँ. The first thing is your urinary bladder. The nerves in the urinary bladder has become weak, or you have a nerve issue. अगर आपके nerve का issue है, you are a person who gets into anxiety very easily. यानी आपकी life में, in your life, if there has been lot of adrenal overactivity, then your nervous system becomes weak, and that nervous system also helps in the movement of any organ or your limbs. So urinary bladder has a mesh of nervous system which helps it to expand and contract. So if your nervous system becomes weak, obviously you will not be able to hold. The second factor, if your body has a lot of toxins, it generates a lot of metabolic toxins. For example, your glucose in the blood is basically a toxin. For diabetic people, the glucose, higher glucose in the blood is basically a toxin for the body. The body creates frequent urination and thirst to throw out that waste. Then you will face frequent urination. But that doesn't mean you have a nerve issue for a short period of time. For a long period of time, if you have diabetes, then you will get into a nerve issue. But if you have diabetes, if you take care of your metabolism, your nervous system will remain intact and the strength will be there, and you will not get into any neuropathy.
ठीक है ना? तो if you rejuvenate your nervous system, you'll see your metabolism as well as this issue will be taken care. Third thing is, I talked about Nagvayu. Urinary system is also unidirectional movement. It has a factor of Nagvayu associated with it. So there are people who get into urine infection, UTI, urinary tract infection बहुत जल्दी होता है. And you take medicine, antibiotic, and you become fine, and again it comes up. So it is very difficult to get rid of UTI. Now, why? Because if you do not correct the Nagvayu, your urinary system will not get into the kind of a functionality that it needs. Every functionality needs a certain energy. हर काम के लिए पीछे कुछ ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी है, अगर आप नहीं दे पाएंगे अपने सिस्टम को तो काम नहीं कर पाएंगे. तो नागवायु gives that dynamic energy to the urinary system. We also suggest certain methods through which you not only can come out of your urinary disorder, but also people who face any kind of sexual disorder. And that may also happen as a result of urinary issues. So I can talk about it from many perspectives. बहुत सारे तरीके से बात कर सकते. But the thing is, I am just exploring it. बता रहा हूं आपको हर तरीके से. It will not help. When we diagnose you, we come to know about what has gone wrong. क्या प्रॉब्लम आ गई, और फिर हम उस हिसाब से आपके कस्टमाइजेशन करते हैं. दैट इज एक्चुअल सॉल्यूशन. एनी अदर क्वेश्चन? About shoulder pain, that gives I have shoulder pain. Doctor gave me orthogrit medicines. So any medicine you take, it will not help. Maybe it will help your pain, but it will not help your body. Pain is like a red light. Pain जो है ना आपके शरीर का दोस्त है. It is not an enemy. It's a friend. So only because of pain, you know how to protect yourself. पेन है तभी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं. देखिए, बालों में पेन नहीं होता तो क्या क्या कर दिया, कितने तरीके से काटते हैं बालों को. नाक में पेन नहीं होता तो उसके भी रिबन बना रहे होते हैं ना. कान के भी हम ऐसे गोल गोल रिबन बनाते छोटे और गूंथा करते हैं. सो पेन इज very survival. It's a survival aspect of the body. So pain is indicating there is a problem. तो प्रॉब्लम तो पता लगाओ. तो प्रॉब्लम क्या है? वहां पे घिस गया, स्कैन करा लिया, एक्सरे करा लिया, वहां पे घिस गया. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? रिप्लेसमेंट, आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट और सर्जरी कर लो. इस सर्जरी, विल सर्जरी ब्रिंग बैक द स्ट्रेंथ ऑफ योर शोल्डर? नो, नॉट एट ऑल. एक का सर्जरी कराएंगे फिर दूसरे का भी कराना पड़ेगा. आई हैव मेनी केसेस. रिसेंटली आई टोल्ड, long time back I told a lady, she had a shoulder problem. मैंने कहा कि इसको ठीक कर लो, तुम्हारा ना बॉडी का अलाइनमेंट ठीक. बट शी सेड नहीं, मेरे डॉक्टर ने तो सर्जरी बोला. मैंने कहा ठीक है, मैं क्या बोलूं उसमें, व्हाट शुड आई से. बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं सही. आपको दूसरे शोल्डर में भी प्रॉब्लम होगी थोड़े टाइम. सो शी वेंट थ्रू द सर्जरी. 6 महीने भी नहीं हुए, दूसरे शोल्डर की भी सर्जरी रेकमेंड हो गई है. इस सर्जरी सोल्यूशन, मे बी सर्जरी इज एन इमरजेंसी सोल्यूशन. कोई चीज बहुत ही ड्रास्टिक हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप सीधा करना चाहते हो कर देते. बट इस विल सर्जरी ब्रिंग बैक द स्ट्रेंथ ऑफ योर शोल्डर, मोबिलिटी ऑफ योर शोल्डर, रीजनरेशन फैक्टर ऑफ योर बॉडी? नो, नॉट एट ऑल. दवाई तो इसके लिए बनी ही नहीं है. There is no medicine which cures you. क्या आपको मालूम है इस बात का? कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती अपार्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक ऐसी चीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं. सो इट्स बेसिकली अ पॉइजन. पॉइजन से आप किसी को मारते हैं, दैट्स ओके. चलो पॉइजन लेके भी मारा तो सही.
but there is no medicine for Neuro Musculoskeletal problem or any other chronic disease. तो आप कुछ भी खा लीजिए, आपको थोड़ा सपोर्ट ऐसा लगेगा, दर्द कम हो जाएगा, ऐसा लगेगा आपको, but it will destroy your body for sure. Look for evidences. जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसकी एविडेंस ढूंढिए अपने आसपास में, देखिए लोगों को जो प्रॉब्लम हुई क्या वो ठीक हो गए, क्या उनकी लाइफ में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आए. अपनी लाइफ को देखिए, बचपन से दवाइयां खा रहे हैं मगर प्रॉब्लम ही खत्म नहीं हो रही. सो आप आंखें खोलिए, प्लीज ओपन योर आईज, नहीं तो आपकी लाइफ कैसे अच्छी हो. प्लीज ओपन योर आईज, लुक एट योर बॉडी फ्रॉम द राइट पर्सपेक्टिव. सही तरीके से अपने शरीर को देखेंगे, और आपका शरीर इस वक्त में बहुत तकलीफ में है, उसको मदद कीजिए. प्लीज हेल्प योर बॉडी. वी आर नॉट सेइंग यू डोंट डू एनी अदर थिंग, हम तो बोल नहीं रहे, बट दिस इज समथिंग यू मस्ट डू. इट्स अ रिक्वेस्ट, but the choice is always yours. Okay, Anuradha ma'am, you can please unmute yourself and ask your question, please. Anuradha ma'am. Kavita ma'am, if you want, you can ask your question. Please unmute yourself. Hello. Hello. Yes, Anuradha ma'am, you're audible. Yeah. Sir, this is regarding, I want to ask a question regarding my husband. Actually, I am a rheumatoid from past 10 years. So I want to take this treatment now. This is regarding my husband. From past 1.5 months or 2 months, in his nose, he is getting a foul smell. So anything, any cooked item or anything, whichever is having a pleasant smell also, once it comes to his nose, he's getting a foul smell. Then he is not able to eat anything. What doctors said is this may be after COVID effect. And they gave some medicine which has not helped him at all. So what should be done for this? See, foul smell can happen because of few things. I'll say, I'll describe it. One thing is, if there is a hypothalamic inflammation, your nose is directly related to your brain. If you get into any kind of a nerve issue, especially if there is a hypothalamic inflammation, it may happen. The second part is, if because of the nerve issue, and as I said, COVID impacts the lung and the nervous system. The second factor is nervous system. So if the nervous system of the body gets into an impact, and especially the upper region of the body, then what may happen, your nose may develop some kind of polyps inside, or it's a reaction to a weak nervous system, or it's a reaction to COVID, and that may cause foul smell. Right? There can be other factors which I can't talk about on a public platform, because then we are talking absolute logic here. And we have become a little more less intelligent species, because subtle aspects of life, if I start talking about, people say it's kind of a tantric thing. There can be other things also. Now, can it be handled? We have cases of nasal polyps, or people having even breathing issues, sleep apnea, people into sleep apnea, and people into hypothalamic inflammation, who came out of their issues. Now, unless and until we diagnose it, we will never be able to know what is the exact cause of the problem, right? So only if we diagnose, we can say, okay, in this person, this is the problem, and we can actually go towards correcting it. He will certainly get help. He will easily be able to come out of this issue, but he'll have to work upon his system.
This is one thing. The second part I also wanted to talk about is when you say autoimmune disorder, right? Rheumatoid arthritis, when you say autoimmune disorder is not something which comes in and never goes. Morning, your immune system might be a little like hyperactive. In the evening, when you are fine, your immune system comes down to normal. So how to maintain the normal condition of the body? This is what you have to do or learn. Only when you maintain a normal condition of your system, your autoimmune disorder will actually vanish. It is not something which cannot go off, but it will never go off with medication. It will only increase. Medication is like poison for the body. The more poison you give your body, the more risk the body will get into. And because of that, we are getting into autoimmune disorders of several kinds, leading to the end stage, which is cancer. Right? So you can come out of your rheumatoid arthritis condition. You can take a little support of some natural things also, some Ayurvedic stuffs also, but working upon the body, there is no alternative to it. There is no choice apart from this. This is something which is compulsory. Thank Okay. you. Namaskar, Swamiji. Hello. Namaskar. Yes, Swamiji, can I speak to you? I'm Meenakshi speaking. हाँ बोलिए मीनाक्षी बोलिए. I have a thyroid problem. मुझे thyroid का problem है काफी सालों से. But now recently I had a fall, and after the fall I've noticed that from the wrist, my fingers are not. I'm not able to flex my fingers properly. The strength of my hand has become less. There is pain in the hand and all that, thumbs and all that. So I want to take your course. I'll definitely take your course. So is it related to thyroid? Is it because of the fall, or is it something I just wanted to know? I have a little bit of knee pain also. Now a little bit of knee pain is also coming. So is it related to thyroid? So thyroid is a factor because of which recovery doesn't happen properly. The thyroid is that factor. I said thyroid is a kind of a protein allergy. That means your body is not able to manufacture the requisite amount of protein or the way it needs protein. So if you feed your body with a lot of protein, your body gets into more problems. So for thyroid people, they have protein allergy. You should avoid protein. First thing. But avoiding protein is not a solution. This will be of a little help. The second part of it is because of the lack of required protein in the body, and every hormone enzyme is protein. So your body gets impacted in a way where the transport system of your body becomes almost like weak. So your body cannot transport anything. You get into bloating situation. Bloating होता है लोगों को, water retention, bloating, है ना? इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलता है. The fat of the body doesn't transport. So people easily acquire fat, but they are not able to utilize it. उसका शरीर इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, उस फैट को जमा ही कर पा रहा. And fat deposit is also an indication that your body is in risk. है ना? आप खरोंच लगा लीजिए, जलन होगा ना, you'll get inflammation. So put some ghee, inflammation will come down. So if your body has inflammation, body will create fat or not. वो तो बचाएगा ना फैट क्रिएट करके. फैट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी. कोलेस्ट्रॉल, फैट, फैटी लिवर, ट्राइग्लिसराइड, ये सब तो आपने को बचाने के लिए शरीर कर रहा. तो आपको ये गलत सोचना छोड़ना पड़ेगा. दिस इज नॉट रॉन्ग. कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड, बट यू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ योर बॉडी. अपने शरीर का रिस्क फैक्टर तो कम कीजिए. तो फॉर थायराइड पीपल, प्रोटीन इज अ रिस्क फैक्टर. Any kind of medication will be a risk factor. तो रिस्क कम करेंगे तभी बॉडी ठीक होगा, है ना? वो हार्मोन इम्बैलेंस भी उसी वजह से है. एंजाइम्स नहीं है, रीजनरेशन नहीं होगा. If your body is not regenerating, how will you come out of a problem fast? It will be difficult to come out of a problem. The second factor, as I said, thyroid में rhythm खराब हो जाता. What is the rhythm? The way you walk
walk, the way you think, the way you move your body, everything is rhythm. Hormone, the way hormone functions is rhythm. If your hormone doesn't function, and especially for female, because their protein ecosystem is very, very sensitive, they have to create a baby. उनका protein ecosystem बहुत sensitive होता है. So for females, you know what is female? Female का अगर sequence बनाया तो rhythm, balance and strength. This is female. और male, strength, balance and rhythm. So strength ज़्यादा चाहिए, metabolic strength ज़्यादा चाहिए. That is why male gets into diabetes more often. Female gets into thyroid because rhythm has been lost. Rhythm बहुत जल्दी छूट जाता है. So rhythm of hormone, your menstrual cycle is a rhythm. If you don't handle it properly, Rajaswala Paricharya was something which was embedded in this culture. भारतीय परंपराओं में और भारतीय संस्कृति में Rajaswala Paricharya, how to handle your Rajaswala period, your menstrual period. That is why even today the best menstrual health is of Manipur ladies. मणिपुर की जो फीमेल उनका बेस्ट मेंस्ट्रुअल हेल्थ है. सबसे वर्स्ट किसका है जिसको फॉलो करते हो? अमेरिका, यूरोप. Those females have worst menstrual health. Now, if you are losing the rhythm, आप rhythm lose कर रहे हैं. Rhythm lose करेंगे तो क्या होगा? चलने में भी तकलीफ आएगी. वही नहीं, सोचने में भी थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी. Do you know this? Your emotional structure will go for a toss. है ना? Mood swings. ठीक है. और क्या बहुत सारी चीजें से रिलेटेड. So when you walk you need that rhythm, when you dance you need that rhythm. अगर वो rhythm में गड़बड़ी आएगी, कभी कभी लोगों को क्या होता है कि because of the thyroid issue they become dizzy very fast. बहुत जल्दी dizziness आता है because again they have lost the rhythm. तो ये रिदम लाना बहुत जरूरी है. अगर आप इसको लेके आते, if you lose the rhythm, what will you lose second? The alignment of your body. Balance आप lose करते हैं. नाभि, कौड़ी, नले, these are three things that needs to be balanced in your body. है ना? अगर आपका बैलेंस खराब हो जाएगा, in a simplistic manner, what you read in Google, उसमें बता रहा हूं मैं, you must have heard about of sciatica nerve. ये नर्व बैलेंस में नहीं होता तो इट एक्चुअली कीप्स द स्ट्रक्चर ऑफ योर लिम्ब इंटैक्ट. तो आप एक तरफ में गिरते हैं, अगर बैलेंस गड़बड़ हो जाती, इफ यू डोंट ब्रिंग द बैलेंस बैक यू मे गेट परमानेंटली एन इश्यू ऑफ दैट लिम्ब. वो परमानेंटली इश्यू आ जाए. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू? गाड़ी भी जब गड्ढे वड्ढे में जाती है ना ज्यादा, तो आप उसका अलाइनमेंट कराते हो ना, कराते हैं ना. एक कॉमन सेंस है. दिस इज अ कॉमन सेंस बट इट डजंट गेट्स अप्लाइड टू आवर बॉडी. बॉडी के लिए कॉमन सेंस कहाँ चला जाता है सबका? तो अलाइनमेंट तो करना होगा, तब जाके ये ठीक होगा. मे बी इफ देयर इज अ, देखिए हड्डी भी टूट जाए तो वो क्या दोबारा जुड़ जाती है? हड्डी टूटना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. हड्डी का टेढ़ा होना भी प्रॉब्लम नहीं. पेन डजंट हैपन बिकॉज योर बोन्स हैव बिकम, देयर आर गैप्स की वजह से जॉइंट्स में पेन नहीं होता. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन कम कर दीजिए, है ना. अगर ऐसी बात थी तो हमारे अष्टावक्र महाराज जी जो 8 जगह से टेढ़े थे वो तो चल भी नहीं पाते, उनके तो शरीर में पेन रहता नहीं. पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल इश्यू. पेन मोस्टली हैपन्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, पेन चला जाएगा. बॉडी को अलाइन करेंगे. बॉडी अगर अलाइन होगा तो जो रिस्ट की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी आपकी. Okay, Mangesh sir writes about skin problem. Ma'am, can I ask my question, please? Good evening, sir. Okay, Hello? one by one, 1 minute. Kavita ma'am, you can ask your question. Yeah, good evening, sir. It's nice to attend this session. I have lower back pain and I've been diagnosed that because of the annular tear, it is causing back pain. So, and also I'm having pelvic chronic syndrome.
So can this this course can cure my problem? The lower back pain is a very simple issue to cure. Okay. The problem is we are not addressing it in the right manner. So when there is a lower back pain, so why lower back pain happens? And mostly you'll see females get into lower back pain very easily. As I explained earlier, if you get into hormonal imbalance, one factor is hormonal imbalance. The hormonal imbalance causes metabolic disorder in your body. And that may cause lower back pain if you are a person whose lower part of the body has some weakness. The second factor is imbalance in the body will create disalignment of the body. If you align your body, for some people, their lower back pain will vanish. I'll give you one example. I fell from almost 2 stories on a concrete floor. So I broke my right hip, and I was a sports person. Every bone of my body is fractured. I used to play a lot of outdoor sports, including football and basketball. So almost every part of my body is broken, but I don't get pain anywhere. Why? Because hip problem may happen because of disalignment. You align your body, you'll see your problem will go away. So what is the problem? If your metabolism is weak, if your digestion is not proper, you might get into lower back. If your Nagvayu is not proper, you might get into lower back. So if your menstrual cycle is not proper, you might get into lower back. If your hormone levels are not fine, right? So there can be many reasons, or there can be multiple reasons because of which one problem is coming. So addressing just one part of the problem will not solve it. What I'm trying to say is, your heart doesn't work without your liver doesn't work without your kidney doesn't work without your nervous system. It's an integrated system. But you have a hepatologist for your liver, gastroenterologist for digestive system, a cardiologist for your heart, nephrologist for your kidney, and maybe sooner you'll get a doctor for your left eye, another doctor for your right eye, maybe 36 doctors for your teeth. Life doesn't work like that. And see, no solution. No solution. About 75% of the problem is chronic, and there is no solution for any chronic issue. Rather, we are getting into complicated issues. I'm just telling you about what may be the cause of it. But once again, what we do, we diagnose you. That is a very, very important aspect. We diagnose you, what factors or what factor is weak, and then we customize so that we are working in the right direction. But anyway, holistically, we will be addressing your body. The way this program is designed, that it will address anyhow every aspect of your body, specifically to the problem, to the diagnosed problem, but inevitably to the every aspect of your body. It's a holistic treatment. Yes, sir. Thank you for your answer. That's what actually my doctor has diagnosed. The reason for my low back pain is I fell down, and that the reason is annular tear. He told me that this is because of the annular tear. So I didn't go for discography, which he advised. And so that's the reason I'm asking this program after 9th week, when you give me a correct customization asana to do it, will my annular tear repair? Yes, it will get repaired, but I'll tell you one more thing. Go for any scan. A scan will cost you, a CT scan will cost you around 5,000, 6,000 rupees. But have you found anybody who has got cured by doing CT scan? No. Scan just tells you about this is here, it has to be there.
Now, what your doctor will say, okay, we'll surgically will put it there. But once again, that surgery may cause trouble to you if your body is not aligned. They are not aligning your body in any which way. Aligning of the body is a fundamental strength of you. Okay. The alignment factor is the strength of the body. They are not doing any kind of alignment or increasing the strength of alignment. Okay. So, for some emergency cases, you can take surgery, right? But once again, even if you go for surgery, alignment is something you must do. Yes, yes. And, Like, right? Swamiji, can I ask my question? okay, thank you, sir. Boliye, Ma'am, yes. can I ask my Hanji? I am 60 years old now. For the last 50 plus years, I have been suffering from a chronic autoimmune condition called hidradenitis suppurativa. This affects my glands and the closed part where the skin meets skin, those kind of areas. And the glands don't cure, they don't, once the there is a lot of pus and this thing form, infection and pus form, and then it doesn't cure itself. It keeps on going on and on. Sometimes they cure, sometimes they don't. So I have about 10 wounds on my 10 to 15 wounds on my body every time. And it's very debilitating, it's very painful. And there is no Yes. cause or cure for this in there are biologicals, they say they help, but they don't really cure you. So can Kumbhak therapy help me? Yes, Kumbhak therapy can help you. First of all, how it will help you? ये मैं बता देता हूँ. I'll tell you how it will help you. So, your sweat gland gets inflamed. Especially it impacts the armpit and groin, where the pus is basically infection. So it's an infection which gets caused because of inflammation. Inflammation होगा आपके glands में, sweat glands में. Then how the body will cure? इसको cure कैसे करेगा? It'll increase your immune system. It will increase the impact of your immune system. Immunity को आपको बढ़ा के ही cure करेगा. So if your glands are inflamed, the body will increase the immunity factor, or you can say the T cells or white blood cells, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं, but आपके immunity को बढ़ाएगा. Now, autoimmune disorder. Because of autoimmune disorder, what happens? Your body will not be able to cure it properly. ऐसा क्यों हो रहा? So whenever there is a risk in the body, जब भी body में risk होता, what are the risks? Inflammation is one risk. You eat a medicine that is basically a risk. It inflames your liver. Liver inflammation is a risk. Then the body will try to handle it. It will increase the immunity factor. But when the liver will actually handle it, and your immunity will go down. So the moment you take medication and the body gets into an inflammation, it actually increases the adrenal activity, which is associated with your immunity. Now, what are other risks in the body? So, do you know you are inhaling polluted air? Yes. The environment is polluted. Yes, Isn't that a risk? Right. You know you are eating genetically modified food. Yes. Isn't that a risk? Yes. Do you know when you go to school and kids go for examination, they get into some kind of anxiety situation? Why? Because whatever they study in school, it is not relevant to their life. They don't see any relevancy of that in their life. How much you have studied, whatever you have studied in school, you have used in your life? 99.9% of what you studied, you never used in your life. So, the very education system is creating risk. The very corporate system, the job culture is creating risk.
The food culture is creating risk. The lifestyle is creating risk. So this, ये बेचारा बॉडी इसको इतना रिस्क में डाल के रखा, हाउ विल इट हैंडल दिस? जब आप घबरा जाते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करना, ये भी घबरा जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है. भाई ये ऐसा क्यों? You have not anything which is conducive to health. Autoimmune disorder will become epidemic. Autoimmune disorder will. स्वामी जी प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस था इसलिए मैंने म्यूट किया था. I see lot. I get cases of kids into autoimmune disorder situation. 4-year, 5-year-old kid getting into autoimmune disorder. So first of all, can you correct what wrong we have done overnight? No. You try to correct the environment, it will take 200, 300 years. So how will you be protected in this risky environment? Only if your body has the resilience. इसकी अगर सहन शक्ति आप बढ़ा दें तो ही आप बचेंगे, वरना तो मुश्किल. The second thing is, can you correct the autoimmune disorder with the same thing which has caused autoimmune disorder? दवाई लेके autoimmune disorder बना, आप दवाई से autoimmune disorder ठीक कर लेंगे क्या? It's a ridiculous thought process. So what? How you can correct autoimmune disorder? जैसे आपको घबराहट होता है ना, तब आप क्या करते हैं? What do? You try to calm down yourself, isn't it? आप सांस को धीरे करने की कोशिश करते हैं, मालूम है आपको? आप स्थिर होने की कोशिश करते हैं. फंडामेंटली आप सांस को थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, रोकने की कोशिश करें. दिस वे यू थिंक दैट इट विल हेल्प योर हार्ट पल्स रेट, हार्ट बीट, ऑल दोस थिंग्स. अगर आप नेचुरल, you do it naturally. So you know the situation where you are calm, your breath is